Assalamu alaikum and welcome to Sir Sayyid Children's Academy, English class of grade 8. It's your lecture number 4 and I'm your teacher, Miss Sabah. Dear students, today we are going to study poem The Miller of the Dee. Now make a title page of The Miller of the Dee in your registers. First, let's read about the poet who wrote this poem. This poem is written by the Scottish journalist, poet, and songwriter Charles Mackay. He was born in 1814. He is famous chiefly for his songs, some of which were very popular even in his lifetime. He died in 1889. ये नज़म एक स्कॉटिश जर्नलिस्ट चार्ल्स मके ने लिखी है. ये एक नगमा निगार भी थे. ये 1814 में पैदा हुए और अपने लिखे हुए गानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे और इनके लिखे हुए कई गाने इनकी ज़िंदगी में ही काफ़ी मशहूर हुए. इनका इंतकाल 1889 में हुआ. Now let's read stanza number 1 of the poem. There dwelt a miller, hale and bold, beside the river Dee. He worked and sang from morn to night, no lark more blithe than he. And this the burden of his song forever used to be. I envy nobody, no, not I, and nobody envies me. Now I will translate this stanza line by line for you. एक तंदुरुस्त और बहादुर चक्की वाला रहता था दरियाए डी के किनारे पर. वो सुबह से रात तक गाता और काम करता था. कोई परिंदा भी उससे ज़्यादा खुश न था और ये उसके गीत का बंद था जिसे वो हमेशा इस्तेमाल करता था. मैं किसी से हसद नहीं करता, नहीं मैं नहीं करता और ना ही कोई मुझसे हसद करता है. Third wrong, my friend, said old King Hal, third wrong as wrong can be. For could my heart be light as thine, I would gladly change with thee. And tell me now, what makes thee sing with voice so loud and free, while I am sad, though I am the king, beside the river Dee. इस पोम में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं. थर्ड, थो, थाइन, दी. ये सारे वर्ड्स आर्काइक लैंग्वेज से लिए गए हैं. So when I will explain this in Urdu, you will understand the meanings. Well, in second stanza, the first line is, तुम गलत हो मेरे दोस्त, बूढ़े बादशाह हाल ने कहा. तुम वैसे ही गलत हो जैसे कि कोई गलत हो सकता है. क्या मेरा दिल भी इतना खुश हो सकता है जितना कि तुम्हारा? मैं खुशी से उसे तुम्हारे साथ तब्दील करूँगा. और अब मुझे बताओ तुम किस तरह गाते हो इतनी बुलंद और आज़ादाना आवाज़ के साथ, जबकि मैं उदास हूँ अगरचा मैं बादशाह हूँ दरियाए डी के किनारे पर. The miller smiled and doffed his cap. I earned my bread, quoth he. I love my wife, I love my friend, I love my children three. I owe no penny I cannot pay. I thank the river Dee that turns the mill, that grinds the corn to feed my babes and me. बादशाह की ये बात सुन के चक्की वाला मुस्कुराया और उसने अपनी टोपी उतारी और कहा, मैं अपनी रोज़ी कमाता हूँ. उसने कहा, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने तीनों बच्चों से मोहब्बत करता हूँ. मैं किसी की एक पाई का भी मकरूज़ नहीं. मैं दरियाए डी का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी चक्की चलाता है, जो अनाज पीसती है, जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ. Good friend, said Hal, and sighed the while, farewell and happy be, but say no more. If thou didst say true, that no man envies thee, thy mealy cap is worth my crown, thy mill my kingdom's fee. Such man as thou are England's boast, O miller of the Dee. अच्छा दोस्त, हाल ने कहा और लंबी आह भरी, खुदा हाफिज़ और हमेशा खुश रहो. लेकिन अब दोबारा ना कहना, अगरचा आप सही ही कहते हैं कि कोई भी आदमी आपसे हसद नहीं करता
آپ کی آٹے سے بھری ٹوپی میرے تاج سے زیادہ قیمتی ہے، اور تمہاری چکی کی قیمت میری سلطنت کے برابر ہے۔ تم جیسے لوگ انگلینڈ کا فخر ہیں، اے ڈی کے چکی چلانے والے۔ اس پوم میں ہم نے ایک بادشاہ اور ایک چکی چلانے والے کے درمیان کی گفتگو کے بارے میں پڑھا، جس میں بادشاہ پہلے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ آخر چکی والا اتنا خوش کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ بادشاہ خود اداس ہے، وہ بھی ایک سلطنت کو سنبھالے ہوئے، اور ایک چکی والا صرف ایک چکی میں کام کرتا ہے اور اپنی زندگی میں خوش ہے، اور اس کی اس خوشی سے اس کو یقین ہے کہ کوئی بھی حسد نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو پہلے یہ بات بالکل غلط لگتی ہے، لیکن جب وہ چکی والے کے خوش ہونے کی وجہ جان لیتا ہے تو وہ اس بات پر ایگری کرتا ہے کہ چکی والا صحیح کہہ رہا ہے، اور آخر میں وہ چکی والے کو پریز کرتا ہے کہ اس جیسے چکی والے بادشاہ کی حکومت میں اس کی سلطنت یا اس کے ملک کا فخر ہیں۔ تو بیسیکلی اس پوم سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور جتنا ہمیں مل رہا ہے اس میں خوش رہنا چاہیے۔ Now let's move forward and see what you have in your home task. Now here you have word meanings. Here I have write the meanings of all the difficult words of the poem. You will copy them as it is in your registers. Here we have 6 question answers. You will write their answers in your own words. And to do that, repeat this video 2 to 3 times to get the better understanding of this poem. And after that, you will surely be able to answer these questions in your own words, and you will do this work in your registers. Here we have 2 most important questions regarding the poem, that is, what we know about the poet of the poem and what is the message that we get from this poem. And I have written both the answers for you. You will copy them as it is in your registers. All the work of this poem will be done in your registers. Now, that's all for today. Keep watching and keep learning with SSC Official YouTube channel. And to do that, please subscribe our channel and press the bell icon to get notified about your new lectures. I'll see you in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.